है ना क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल, देखो इसमें बोल रहा है कि अ कॉर्न कोब शेप्ड समवट लाइक अ कोन। वो जो कॉर्न कोब है जैसे ये साइड में बना हुआ है, इट इज़ समवट लाइक अ कोन, कोन की तरह की शेप में है वो, ठीक है। तो हम एक कोन बना लेते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये एक कॉर्न कोब है जो कि कोनिकल शेप में हम कह देते हैं इसको, ठीक है, इट्स इन कोनिकल शेप। You know that bottom of a cone is of circular shape, okay, this one. Then what is given here? Okay, its radius is given 2.1 centimeter. Radius is 2.1. When we will write the radius here, its r is given 2.1 centimeter and height is given 20 centimeter. Okay, so if you will draw its height, it is the height, okay, because you know in a cone there are two kind of heights, one is slant height, the other one is the normal height. See this one, this height is given h, it is given as 20 centimeter, okay. So see, the question is saying about its area, it is asking about the area. So you can see if each 1 centimeter square of the surface, मतलब इसके अगर 1 centimeter square surface में 4 grains हैं, then how many grains it can have, कितने grains इसके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज इन इट्स TSA, देखो इसमें ना पूरे में ग्रेन्स होते हैं, यहाँ पे नीचे जो है ना, जो हमारे पास नीचे सर्कुलर पार्ट है उसमें भी ग्रेन्स होते हैं। यू मस्ट हैव ईटन दिस थिंग, पहले तुमने कभी खाया होगा। तो इसमें देखो यहाँ पे नीचे भी, यहाँ पे भी ग्रेन्स होते हैं। सो दैट मीन्स वी विल बी फाइंडिंग द TSA। सो हाउ यू विल बी फाइंडिंग द TSA ऑफ अ कोन? TSA फाइंड आउट कैसे करेंगे? TSA ऑफ अ कोन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द TSA? It is pi r L plus r. This is the formula to find the TSA of a cone, but we are not having its slant height. ये L तो हमारे पास नहीं है। So first we will be finding this L ना, ये L find out करना पड़ेगा। This L is the slant height. Yes, so we will be using L square equal to h square plus r square. This is the formula we will be using to find L. So it will be how much? h is given 20, so 20 square we will be finding, so it will be 400. I am writing, देखो h कितना है? 20 है, ये यहाँ पे चेक कर सकते हो तुम लोग। तो h अगर 20 है दैट मीन्स h स्क्वायर विल बी 400 प्लस r कितना है? हाउ मच? दिस r इज 2.1, 2.1 का स्क्वायर करेंगे, हाउ मच वी आर गेटिंग? 4.41, ओके 41। दिस इज द स्क्वायर ऑफ r वी आर गेटिंग, ठीक है। सो दैट मीन्स L स्क्वायर वी आर हैविंग, L स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास? 404.41। दिस इज L स्क्वायर, ये L स्क्वायर आया है, बट वी नीड द वैल्यू ऑफ L। सो व्हेन यू आर हैविंग समथिंग इन स्क्वायर यू विल फाइंड इट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करोगे? 404.41 you will write, you will make in pairs. See this one, this is single, then these two. So now 2 2 ja 4, then 0 4, double of 2 again 4, then you will take 0 0 and you will get 0, then it will be 4, then decimal is there, so put decimal, then 4 and 1, so it will be 20 again 40, okay, that means you will go over 1, so 401, okay, you are getting 401, so it will be 40, then you can again take 2 zeros, then it will be 201 402 and you will get 0, ठीक है। सो यू विल टेक हियर दिस L विल बी इक्वल टू 20.10 सेंटीमीटर। दिस इज योर L। नाउ यू आर हैविंग L
you are having L, you are having R, already you are having. Now you can easily find the TSA. The main thing is you just need to focus on the square root. How to find the square root? You are getting 20.1. This is the square root you are getting for this 404.41. At least try to find it up to 2 digits. 2 digits तक तो try करना ही है, ठीक है. So now just put all the value. Just see if any value of pi is given in the question. Pi की कोई value है question में? No. So you will be using only 22/7. If no value is there, so let us take it as 22/7. So it will be TSA. TSA of cone will be what? Pi r. That means 22/7 multiply by r is what? 2.1. Then bracket L plus R, it will be 20.1 plus 2 point, okay, sometime it doesn't work, 2.1. okay, so that means it will be cancel out this decimal, take 10, then 7 1 ja, 7 3 ja 21, so 22 into 3 you are getting 66, multiply 20.1 plus 2.1, you will be getting 22.2. okay, now you are having 10 in the denominator, just remove this decimal also, you will be getting one more 0 in the denominator, then multiply 66 by 222 multiply by 66, you will get 6 2 ja 12, 1 6 2 ja 12 13, 6 2 ja 12 plus 1 13, okay, 1332, again you will be getting 1 3, okay, so and 3 and 2, so it will be 2 5 6 4 1, so it will be 146.52 centimeter square, because 2 zeros are there, 2 zeros भी हैं हमारे पास यहाँ पे, so it will be 146.52 centimeter square. Now in the question you must have seen, question में ये भी बोला हुआ है, if 1 centimeter square, if 1 centimeter square is having 4 grains, अगर 1 centimeter square में 4 grains हैं, then total we are getting 146.52 centimeter square. It is 52 centimeter square. So how many grains will be there? We will multiply 146.52, multiply it with 4, and how much you are getting now? Just multiply 4 2 ja 8, 4 5 ja 10 plus 0, oh sorry, 4 5 ja 20, 0 2, 4 6 ja 24 plus 2 26, yes, 4 4 ja 16 plus 1 2 8 and 4 1 ja 4 plus 1 5. So you will be getting around 586 grains. Around 586 grains you will be getting from this one. Now just see the answer of this one, how much it is given in question, because it's an example. We can see the answer here if possible. And what is the answer given here? So they Yes, have found the 531. See, they have find out only they have found CSA. it. Only CSA they have find out, but as it is not clear in the question whether the grains are only on the sides, you can see it is not anywhere clear that the grains are only on the surface of the cob. Okay, so you will be finding TSA or CSA. In both the cases you will get your answer as correct. In this third question, you have to construct a triangle PQR in which QR is 6 centimeter, angle Q is 60, and PR minus PQ is 2 centimeter. Okay, so just see, we are given with the difference of two sides, we are given with one angle and one base is given. So this QR we will be taking as base. So we will draw the base QR first. So let me delete this one. Now just see, we will be taking the base first. So base is this one, this is 6 centimeter, suppose I am taking 6 centimeter, this is QR. Just see your question once again,
You can see this QR, you have to construct a triangle PQR in which QR is 6 centimeter. So I have taken this QR as 6, then angle Q as 60. Okay, now we will be constructing angle Q. Angle Q construct karna hai, that means I will be putting my compass over this Q point. I will mark an arc like this, and the first arc, this first arc will be of how much? It will be of 60 degree. Okay, so that means I can construct a line through it. मैं यहाँ से एक line construct कर सकता हूँ like this. I will be constructing a line through this. Okay, and this line will be of 60 degree angle. यहाँ से जो ये angle draw हुआ है ना, ये अभी 60 degree हुआ है. Now we are given with one difference. See the difference in the question, that is PR minus PQ is 2 centimeter. Okay, so we will use this one, PR minus PQ, it is 2 centimeter. We will use this one. How we will be using? See, by using this Q point, ये वाला जो Q point है ना इधर, ये Q, ये वाला, okay, by using this one, this Q1, I will mark an arc of 2 centimeter over this line. जो अभी हमने लाइन ड्रॉ की थी उस पर मैंने कितने 2 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ की, तो क्या मेरे पास ये P पॉइंट आ गया? नो, दिस इज नॉट द P पॉइंट. ये वाला P पॉइंट नहीं आया है अभी, बट आई हैव डन जो 2 सेंटीमीटर जितना भी एडिशन या डिफरेंस दिया होता है ना, जस्ट यू विल मार्क एन आर्क ऑफ दैट वन. Okay, so I have marked an arc of 2 centimeter here. I will name this point as A. कुछ भी नाम दे सकते हो इस पॉइंट को. Now just join this R with this A. इस R को A के साथ by using dotted line you can join. Okay, dotted line use करके join कर सकते हो. Now you know how to take perpendicular bisector because you have to take the perpendicular bisector of this one now. Perpendicular bisector of AR. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लेते हैं, कैसे करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? हाउ वी विल टेक? आई विल पुट माई कंपास ऑन ए, open it more than half. Suppose I am opening it up to this point. I will mark an arc above, an arc below. Then I will put my compass on R with the same measurement. I will mark an arc and like this. And now I will again take a line in dotted form. एक डॉटेड फॉर्म में एक लाइन लेंगे फिर से. ओके, दिस वन सपोज ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, बट लाइक दिस यू विल टेक. ओके, एंड यू नो व्हाट, दीज टू लाइन्स विल कंबाइन. विच टू लाइन्स आई एम सेइंग? दीज टू लाइन्स. वन इज दिस वन. व्हेन यू विल टेक इट फर्दर ना, जब तुम इसको आगे तक लेके जाओगे, when you will take this one as further, these two lines will combine. Actually for me it is not combining here. I will just try to draw it once again. See, these two lines will combine like this. ऐसे कुछ combine हो जाएगी. ये जब तुम perpendicular bisector लोगे ना, this will combine with this one and you will get a point over there. Then just you have to join. What you have to join? You will be joining with this point and that point. That point will be P. वो जो point आएगा ना वो P आएगा. Then you will subtract PR and PQ and you will get 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा तुम लोगों को. ओके, फर्स्ट विल टेक अ लाइन ऑफ 6 सेंटीमीटर. सपोज आई एम टेकिंग इट हियर. वेयर इज द पेंसिल? दिस वन. फ्रॉम दिस पॉइंट टू okay, this is the line of 6 centimeter I am having. Now take it anywhere else. Now we can take a point that is QR. The point is Q and R now. So we will name this point as Q. And it's a little bit tough in writing this one. Okay, this is Q, this is R. Okay, now we can use this one to construct an angle of 60 degree, no? Okay, so we can change this one also, no? So yes, this is. And you just lock that, sir. Okay, we can lock this one also. And click Okay, on that
that setting once, and then it will mark the. Okay, we'll click. Okay, then I'll mark an angle of 60 degree. Just a minute. It's okay, wait. Because we just need to mark 60 degrees, so we'll take from Q point, then we'll mark an arc like this, then we'll lift this one and put this over here. Okay, so again what we have to do, we have to just wait, थोड़ा सा टफ हो जाता है ये चीज़ें यूज करना. हाँ, सी it will mark like this. This arc will cut the other arc. This will cut this one. Okay, so that means now we are getting a point, so through this point we can take this one, है ना. Through this point we can take a line. एक लाइन ले सकते हैं हम इस पॉइंट के थ्रू. Suppose this is the line I am taking. This QR, this is the angle of 60 degree I have got. Okay, so the first angle I have got is of 60 degree. So this is 60 degree. Okay, now what to do, just on this line just make a 2 centimeter. Okay, 2 centimeter, just measure this one as 2 centimeter. Okay, we'll try to measure it as 2 centimeter. That somehow a good application is there for construction. Okay, we'll measure it and mark 2 centimeter over here. You can see this is the one. I can mark it here now. Okay, this is the point I can mark. It is not marking, but I'll try to mark it if possible. Okay, this is the point we are having. I'll try to mark it with any other color, so if possible. Okay, this one will try to mark it. Okay, suppose we are getting somewhere here 2 centimeter. Okay, then we will join this one. We'll join this 2. Some problems are there in constructing on this one. Okay, this will construct. So we'll join this one with the dotted line, then we'll take the perpendicular bisector of this one. We'll put our compass over here. We will open it more than half. See, more than half means this one, this much we can open it. Now again we'll lock it, then we will mark an arc. Okay, we'll mark an arc over here, and also we'll mark an arc above. Here we need to mark an arc here also. And okay, and from the other point also, from this point also we will cut this arc. A little tough situation is there. Okay, this one we'll cut, then also we'll bring this one down.
and we'll cut this one here. Okay, see, this is the thing I'm saying. Then you can construct a line. Now you can construct a line through it. A line through it you can construct. Okay, from here you can construct a line. Now see this line, then you know what, this line and the other one, this one, these two lines will meet. ये जो दोनों लाइन है ना, इनको join करना है. These two lines will meet, but see, our screen is not that much that I can show you meeting there. This red one, this red line I have constructed, and this black one, they will meet at a point. वो एक point पे जाके मिलेंगी. हाँ, from here if you will extend it ना, they will meet certainly at a point, and that point will be P. And now after getting that point, what you will do, you will put your scale over here, okay, and you will join that point. You will join that point P to this point R. This is what you have to do. So this is how you can construct this question. ऐसे construct कर सकते हो. So this is the question 10.4, question number 1. Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. Find the length of the common chord. Okay, so we can construct first. जो figure है वो draw कर लेते हैं पहले. We are given with two circles. One is this circle. We are given with two circles. One is this one, then other is this one. One is of radius 5 cm, I think. One is of radius 5 cm, other one is of 3 cm, and the distance between their centers is 4 cm. So if I am saying that the radius of the first one, see, I am joining this to the center of the first one, so that means it is the radius of the first one. Then the other one I will be taking this green one to the center of this one, that means it is the radius of the second one. Okay, and we are given with the distance between their centers, this purple line. This is the distance between their centers, and this distance is given how much? This is given 4 cm. So just one by one we will write everything. It is given as 5 cm. Then this one is given as 3 cm. Okay, and the distance between their center is 4 cm. Find the length of the common chord. Okay, this one is given as 4 cm. This, suppose this is O I am taking, the center of the other one I am taking as A. Okay, and this point I am taking as P. Now we need to find, what we need to find? We need to find the length of the common chord, this one. Okay, this brown line, the length of this one, suppose I am naming this one as PQ. This one I am naming as PQ. We have to find the length of this PQ. So how we will be finding this PQ? See, the first thing, whenever two circles are intersecting, okay, जब भी दो circles intersect कर रहे हैं, you can see this one, this one center with one circle with center O, the other one with center A, they are intersecting at this point. So that means what? This common chord and the distance between their
सेंटर्स, जो ये कॉमन कोड होती है ना, उनके बीच में जो भी कॉमन कोड बनेगी और जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर होगा वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर. सो वी विल बी गेटिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ओवर हियर. यहाँ पे एक एंगल बनेगा 90 डिग्री. सो दैट मीन्स इफ आई एम सेइंग दिस पॉइंट एज m एंड इफ आई एम सेइंग दिस OM इज x, मैं इस OM को अगर x मान लेता हूँ, देन हाउ मच दिस MA विल बी, ये MA कितना आएगा, x minus 4. इट विल बी 4 माइनस एक्स बेटा, 4 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा जो है कंप्लीट 4 है और ये पार्ट सिर्फ x है. सो दैट मीन्स जो ये बचेगा ना, दिस पार्ट, दिस विल बी 4 माइनस एक्स. 4 में से ये x माइनस करोगे तो हमारे पास 4 माइनस एक्स बचेगा ना. ओके, नाउ जस्ट सी वन थिंग, वी आर हैविंग 2 राइट ट्राइंगल्स, वन राइट ट्राइंगल वी आर हैविंग. हाँ, तो जब हम ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं ना, देखो हमारे पास यहाँ पे ना 2 राइट ट्राइंगल बन रहे हैं. एक राइट ट्राइंगल PMO बन रहा है, PMO. इन राइट ट्राइंगल वी विल टॉकिंग अबाउट PMO एंड द अदर वन PMA. ये 2 राइट ट्राइंगल हैं. सो इन राइट ट्राइंगल PMO, फर्स्ट ये वाला राइट ट्राइंगल देखो, इसमें ना पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे. वी विल यूज पाइथागोरस प्रॉपर्टी. So according to Pythagoras, can we write that OP square will be equal to OM square plus PM square. OP square will be equal to OM square plus PM square. So that means OP is how much, 5. So 5 का square करेंगे, इधर आएगा 25. OM is how much, OM is x. So we will be writing x square plus this PM is what, ये PM कितना है, it is not given, so we will write only PM square. ठीक है. Now we will move to the next one, next PMA. So now we will be we'll leave this one, first equation हम यहीं छोड़ देंगे. In second one, in right triangle PMA, this is the right triangle I am talking about, PMA. So in this triangle, what will be the situation? PA square will be equal to PM square plus MA square. Now just find out PA, how much this PA is given to you. This is 3. So 3 square it will be 9. Then PM we don't know. So PM square again will remain same. Then 4 minus x whole square, because this MA, check out this MA in the figure, ये MA कितना है, it is 4 minus x. So just we are putting the values from the figure. If we are constructing a good figure na, then it is very easy to solve. Okay, so just put all the values from the figure itself. Now 9 equal to PM square plus, so 4 minus x whole square, what it will be, जब हम 4 minus x whole square, when we will be solving this one, but we are getting 4 4 ja 16 plus x square minus 4 2 ja 8x. I am using the identity a minus b whole square. It is a square plus b square minus 2ab. That is the identity I have used here. So now 9 equal to, can you put any value of PM square here from equation first equation को ध्यान से देखो, just see this one. Can I put anything for PM square here? I can put 25 minus x square. कैसे, देखो ये x square अगर इधर आएगा तो it will be in minus ना, 25 minus x square and it will be the value of what, PM square. So plus it will be 16 plus x square minus 8x. Now x square to x square it will be cancel out, because one is minus, one is plus, so it will cancel out. Now what we are left with, 25, see 9. Okay, if I am taking this 8x, it is negative here. If I will take it to the left side, it will be plus 8x. See, this is 9, then it will be plus 8x, and in equals it will be 25 plus 16. 25 plus 16, how much we are getting? 41.
So 8x will be equal to 41 minus 9 because this 9 will go to this side, subtraction. So 8x will be 32. So that means what? 8 1 ja, 8 4 ja. So x we are getting as 4 centimeter. अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. इफ वी आर गेटिंग दिस x एज 4 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास ये x 4 सेंटीमीटर, x हमने क्या एज्यूम कर रखा है? व्हाट इज x इन द फिगर? इट इज OM. वी हैव टेकन OM एज x. हमने OM को x एज्यूम किया था. You can see this figure clearly. OM as x we have taken and see this OA. OA कितना है फिगर में? How much is OA? 4 minus x. 4 minus x, sir. That is MA बेटा. 4 minus x तो MA है. I am talking about OA. O से लेके A तक. 4 centimeter. That is 4 4 सेंटीमीटर. देखो जो ये OA है, दिस OA, इट इज 4 सेंटीमीटर एंड वी आर गेटिंग OM ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा है कि OM भी 4 सेंटीमीटर आ जाए और OA भी 4 सेंटीमीटर आ जाए? ऐसा पॉसिबल हो सकता है कभी? No, sir. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब क्या है ना, सी इसका मतलब क्या है? दिस M एंड A आर द सेम पॉइंट. दैट मीन्स यू विल बी राइटिंग M एंड A कोइंसाइड. कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि वो एक ही जगह है. ये M और A अलग अलग पॉइंट नहीं है, क्योंकि देखो OM भी 4 सेंटीमीटर आ रहे हैं और OA भी 4 सेंटीमीटर आ रहे हैं. ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, मैं यहाँ तक इसको बोल दूं कि ये 4 सेंटीमीटर है और मैं इसी लाइन को यहाँ तक भी 4 सेंटीमीटर बोल दूं. क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है. दैट मीन्स कि ये वाला जो M पॉइंट है ना और ये A पॉइंट, ये सेम जगह पे हैं. M और A पॉइंट सेम जगह पे हैं. दैट मीन्स दिस A पॉइंट इज नॉट देयर, इट इज हियर. दिस वेयर दिस M इज, जहाँ पे ये M है ना वहीं पे ये A पॉइंट है. ये सेंटर है सर्कल का. दिस M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो दिस PQ विल बी डबल ऑफ व्हाट? दिस 3. सो PQ कितना आ जाएगा? PQ विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 2. क्योंकि देखो अगर PA जो है, क्योंकि M और A मैंने क्या बोला है? दिस M एंड A पॉइंट कोइंसाइड, सेम जगह पे हैं. सो इफ PA इज 3 सेंटीमीटर, अगर PA 3 है दैट मीन्स दिस PM इज ऑल्सो व्हाट? PM इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर ना. सो दैट मीन्स PQ विल बी हाउ मच? 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या था? 10.3 थर्ड. हाँ, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को. I'll just copy this one so we don't have to come again and again. Let me increase the size. Okay. This is the question. If two circles intersect at 2 points, prove that their center lie on the perpendicular bisector of the common chord. Now it is saying that we are having two circles. Suppose I am having this one and one more circle I am having this one. Okay. These two circles are intersecting at 2 points. 2 points पे intersect कर रहे हैं. You can find out the 2 points very easily. तुम find out कर सकते हो उन 2 points को. See, the first point we are having is A. Suppose this is the A point, this is the B point, where the two circles are intersecting. क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. If two circle intersect at 2 points, 2 सर्कल हैं, they are intersecting at 2 points. Prove that their center lie on the perpendicular bisector of the common chord. अब इनकी common chord, just construct a chord that is common to them. See, this is the chord. This AB is the chord. That is what? That is common. ये common chord है. That is common to both. Now, if I am taking this point O as the center of this circle, this point P as the center of the other circle. Now we have to prove. देखो हमें क्या प्रूव करना है? That a line is there that is perpendicular to perpendicular bisector.
दिस ए बी के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन है. सी सपोज दिस इज द लाइन, just a minute. Suppose this is the line that is perpendicularly bisecting what? AB. ये AB को perpendicularly bisect कर रही है. We have to prove. अब हमें prove क्या करना है? Prove ये करना है कि जो O and P point है ना, O and P point lie on this line lie on perpendicular bisector of common chord, perpendicular bisector of the common chord. अच्छा, अब एक चीज सोचो, जस्ट थिंक, इफ आई एम सेइंग दैट any other center, just mark any other center. Suppose I am saying this O is not the center. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ O center नहीं है. If I am saying that this point Q is the center of the circle, just assume it. Assume करना है कि Q क्या है, एक center है circle का. If I will draw from this point Q to this AB, अगर मैं इस Q से इस AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, फ्रॉम दिस Q टू दिस AB, विल इट बाइसेक्ट द कोड? अगर मैं Q से मैं कहता हूँ आई एम ड्रॉइंग अ बाइसेक्टर फ्रॉम Q टू दिस AB, आई एम टेकिंग, व्हाट यू हैव टू डू, टेक, या एज्यूम करो, जस्ट राइट एज्यूम Q एज द सेंटर. एज्यूम कर लो Q को एज द सेंटर. ये एज्यूम कर लो कि Q जो है वो सेंटर है. सो इफ यू विल ड्रॉ एंड ड्रॉ और टेक बाइसेक्टर ऑफ AB फ्रॉम Q से ना AB के बाइसेक्टर को ज्वाइन कर लो. टेक AB का जो भी बाइसेक्टर है फ्रॉम Q. अच्छा, तुमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इफ वी आर हैविंग इन अ सर्कल, इफ वी आर ड्रॉइंग बाइसेक्टर ऑफ अ कोड फ्रॉम इट्स सेंटर, अगर हम सेंटर से बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, देन इट इज व्हाट? तो वो क्या होता है? इट इज सी इट विल बी परपेंडिकुलर ऑल्सो. वो परपेंडिकुलर भी आता है. यू नो दिस थ्योरम. सी अगर हम किसी भी, इफ वी आर हैविंग अ सेंटर, सपोज दिस O इज द सेंटर, इफ आई एम ड्रॉइंग बाइसेक्टर, अगर मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, बाइसेक्टर मीन्स जो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, देन इट विल बी एट 90 डिग्री. क्योंकि जो भी बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ना, नाउ एज वी नो bisector from the center, bisector from the center to a chord, is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord. देखो, जो हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ना सेंटर से, मैंने Q को एज अ सेंटर एज्यूम किया, मैंने कहा कि Q एक सेंटर है, ओके, एंड Q से मैंने एक सेंटर एज्यूम किया, दैट मीन्स व्हाट? मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर है. बट यू सी, इफ इट इज परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर इस वाले परपेंडिकुलर का क्या होगा? क्योंकि किसी एक पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं है. देखो, अगर मैं एक लाइन लेता हूं, आई एम ड्रॉइंग वन परपेंडिकुलर ओवर हियर, क्या तुम इस लाइन के सेम साइड, सी इस साइड तुम बना सकते हो, इस साइड में तुम बोल दोगे कि सर ये एक और परपेंडिकुलर बन गया है, बट इफ यू हैव टू ड्रॉ वन मोर परपेंडिकुलर ऑन दिस पॉइंट, अगर मैं कहता हूं ये वाला पॉइंट है हमारे पास, दिस इज द पॉइंट, ये वाला, ऑन दिस पॉइंट, ओके, बाय टेकिंग दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन, कैन आई ड्रॉ वन मोर परपेंडिकुलर? क्या मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं?
No, sir. नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं यहां से कोई भी लाइन दूसरी ड्रॉ करूंगा ना, वो या तो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे होने वाली है या फिर 90 डिग्री से कम एंगल पे होने वाली है, लेकिन एक ही पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर मैं कभी ड्रॉ नहीं कर सकता. आई कांट ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स ऑन द सेम पॉइंट. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स we will say here two perpendiculars are not possible on same point. On same point. क्योंकि हम लोगों को अच्छे से पता है कि एक परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड दिस वन वी आर टेकिंग, ये जो दूसरा क्यू ये वाला मैंने लिया है, बट दो परपेंडिकुलर तो पॉसिबल ही नहीं हो सकते. सो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. हमारा जो एजम्पशन था ना, हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था वो गलत था. इट्स रॉन्ग, इट इज रॉन्ग. Our assumption is wrong, so that means what? This O and P point lies on the perpendicular bisector. At the end you can write that O and P lies on the perpendicular bisector of the common chord.